हमारा ईमान जो है वो सिर्फ़ कहानियों पर नहीं बल्कि सच्चाई पर मबनी है और उसकी सच्चाई जो है वो आज तक मौजूद है। और ये पत्थर हर एक चीज़ जो है ना ये पुकार-पुकार के हमें उस सच्चाई के बारे में बताती है कि जो मसीहत है वो एक सच्चा मज़हब है और उसकी जो हमारे पास शवाहिद ऐसे मौजूद है। This was an important pilgrimage center. The people used to come and visit the tombs of the holy men, in this case, Philippus Rasul. And so they would come from the bottom of the hill, climb up here. We can see the pathway going up. And on the way up, they would wash themselves. And here is quite a large area for washing. You can see it's laid out. It's like Roman baths with hot and cold water, different places. And it says, after purifying themselves with water, the pilgrims will carry on up to the sanctuary. We saw that up there. That's the church we've been looking at. And so they wanted to wash themselves and be in a clean state in body as well as in spirit before going up for their pilgrimage, for their ziyarat. थैंक यू सो मच और आप सबको सलाम। हम एक और बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह पे मौजूद हैं। ये बड़ी तारीख़ी जगह है और आई वांट टू रिक्वेस्ट ब्रदर टिम प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस इन क्रिश्चियनिटी। Well, this is really interesting because this links us directly right back to the time of Christ, because one of the 12 apostles of Jesus Christ was Philippus Rasul. And the Christian belief was that he came right here to Hierapolis, here in Turkey, and was part of the church here. And in the year around 80, San Asi, then he was executed. And so for years, the archaeologists believed they could find his tomb somewhere here. And it's so exciting, just in the year 2011, just about 10 years ago, they came to this, and it's from the right period it's a Roman tomb from that period, and inside it they found inscriptions and evidence that this is the actual tomb of Philippus Rasul. Isn't that amazing? And it's not just this tomb, but the fact that the ancient Christians really made this a very holy place, because they used to really respect the tombs of the holy people, and they would come to visit them, and sometimes they come and pray at the tombs. They used to come and pray for healing if they had sickness. And there's evidence under here of where they came to seek healing, and they built a church here. So this church that you can see, this is actually from a few hundred years later, about 400 to 500 years later, but there would have been worship here right from the time of Philip. And we know there was a church here because the believers in Hierapolis are mentioned in the letter to Colossians. So this is the style of the old churches. There are many, many churches like this have been discovered in Jordan, where we used to live, Syria, Turkey, this whole area. And behind it was where the priests would sit, and then the common people would be in this part of the church. This church, of course, was dedicated to St. Philip because it's right here on the spot. And look here, how beautiful these ancient crosses are. These will be from the original church. So these will be from about 500 San Isvi. And look, just superb condition that they're in. And you just imagine that the believers that were here, that carved these, and this was part of the church from so many hundreds of years ago. And here's a very beautiful one here. And this was part of the pillars of the church. This is marble. Marble is very hard stone, so it has lasted very well. So here we are, and it reminds us that our faith rests on strong foundations. And praise God that we are part of this community of the followers of Jesus in every country and going back to the time of Jesus. Thank you. Thank you so much. मैं जो उर्दू सुनने वाले हैं उनके लिए भी मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ।
भाई टीम ने बहुत खूबसूरती के साथ बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पीछे जो कब्र है, ये कब्र जो मसीह के शागिर्द हैं, जिसका नाम फिलिप्पस था, और मसीह के शागिर्दों में से जो एक शागिर्द फिलिप्पस 12 में से एक जो था वो ये उसकी कब्र है। और ये इस कब्र का ताल्लुक पहली सदी के साथ है, ये नहीं कि जब कलीसिया का आगाज़ हो रहा है, शुरू की बात है, तब से इसका ताल्लुक है। और हम जानते हैं कि मसीह के शागिर्द बहुत सारी जगहों पर फैल गए, और जो फिलिप्पस है वो इस जगह पर आया। और ये हमें मिलती है बात, और इसमें सदाकत भी है कि फिलिप्पस को यहाँ पर कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद उसको यहाँ पर उसको दफनाया गया। और फिर सबसे बड़ी बात जो नज़र आती है वो ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्फिक थे कि ज़रूर उनको यहाँ पे उसकी कब्र मिलेगी। और इसीलिए अब शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तकरीबन 10 सालों पहले यहाँ पे उसकी कब्र को, फिलिप्पस की कब्र को डिस्कवर किया गया, दरियाफ़्त किया गया, और फिर यहाँ से सारी चीज़ें मिली। और बहुत सारी ऐसी लिखाइयाँ 2011 में 2011 में 2011 में ये मिली। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी लिखाइयाँ, कुछ ऐसी तहरीरात मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि ये वाक़ई जो कब्र है ये फिलिप्पस की है। इसके साथ-साथ उसके बाद भी यहाँ पे एक चर्च बनाया गया। उन्होंने बताया कि वो सामने आप देख सकते हैं जैसे वो फुटस्टेप्स बने हुए जैसे, लेकिन वो असल में प्रीस्ट के बैठने की जगह थी, और वहाँ पे वो प्रीस्ट बैठता था। और ये जो अंदाज़ है ये आपको जॉर्डन में, सीरिया में, ऐसी जगहों पे नज़र आता है चर्च का। लोग बाकी इस तरफ होते थे, और वहाँ से प्रीस्ट सारे चर्च को, सर्विस को लीड करता था। तो ये जगह बड़ी अच्छी और बेहतरीन जगह है, और ख़ास तौर पे ये मसीही ईमान की मजबूती की जगह है। आप कह सकते हैं कि हमारा ईमान जो है वो सिर्फ़ कहानियों पर नहीं बल्कि सच्चाई पर मबनी है, और उसकी सच्चाई जो है वो आज तक मौजूद है। और ये पत्थर, हर एक चीज़ जो है ना, ये पुकार के हमें उस सच्चाई के बारे में बताती है कि जो मसीहत है वो एक सच्चा मज़हब है, और उसकी जो हमारे पास शवाहिद ऐसे मौजूद है। तो हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे पिलर्स हम देख सकते हैं जिससे साबित होता है कि ये वो पिलर्स हैं जो बड़ी खूबसूरत 5वीं सदी के ताल्लुक से भाई टीम बता रहे थे कि ये इतने खूबसूरत बने हुए पिलर, और यहाँ पे सलीब के निशान इस बात का सबूत है कि यहाँ पर मसीहत मौजूद रही है, और ये मसीहत जो है वो यहाँ पर रही है। और ये पिलर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये खूबसूरत बात जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ायरीन इस कब्र पे आया करते थे, और ख़ास तौर पे जैसे कि मुक़द्दस लोगों के ताल्लुक से ये ईमान होता है कि जब हम वहाँ जाएँगे तो हम शिफा पा जाएँगे। तो ये ज़ायरीन की बड़ा एक सोच थी, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो हम खुशी मनाते हैं कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद जो है इतनी कदीम जगह, और ये मसीहत में एक बहुत अहम इस जगह की अहमियत। तो हम I don't know if it came out of the ground or whether they just filled it from the tank, but anyway, there was water here, like they जी, could wash their hands. ओके। ये वो जगह है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे ज़ायरीन जब आते थे तो वो पानी में से अपने आप को साफ़ करके, और आप कह सकते हैं जैसे वज़ू करके वो आगे चर्च में जाते थे। तो ये एक लिखा है कि ये फाउंटेन है, आबशार है। पानी हमें नहीं पता कैसे आता था ऊपर से, लेकिन यह है कि पानी यहाँ पे मौजूद होता था, तो वो अपने हाथ वगैरह धो के और उसके बाद फिर वो अंदर जाते थे। तो ये रास्ता है अंदर जहाँ पे फिलिप्पस की कब्र है वहाँ का, और चर्च है साथ ही, तो वहाँ जाते थे। लेकिन उससे पहले वो यहाँ से गुज़र के जाते थे। अभी हम ऊपर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर फिलिप्पस जो मसीह का शागिर्द है और रसूल था, और जो यहाँ पर ख़िदमत करने के लिए आया था, उसको मसलूब किया गया, उसको यहाँ पे कत्ल किया गया, और फिर यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जगह ऊपर को अभी हम जा रहे हैं। हमारे बाकी साथी ऊपर पहुँच चुके हैं, तो अभी हम बस उनके पास जाएंगे। Brother Sebi, what do you found? This is where St. Philip was martyred. Okay, ये वो जगह है जहाँ पे मुक़द्दस फिलिप्पस को कत्ल किया गया। उसको Martyred. ये वो जगह है जहाँ पे
ब्रदर फिलिपस को शहीद किया गया। शहीद किया है शहीद किया गया शायद सलीब पर या शायद सलीब पर या किसी और तरीके से, लेकिन उनको यहाँ पे शहीद किया गया है। ये आप देख सकते हैं जगह। वाह। शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पर मैं भाई टीम का शुक्रगुजार हूँ और उनकी मिस बाजी रेचल का कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आ सकूं और हम यहाँ पे आके इस जगह को देख सकें। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Okay.